सो हेलो देयर ऑल माय आईसीएसई मेट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त शुभम सिंह पुंडीर और आज हम फिर से एक बार कंप्यूटर एप्लीकेशंस में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। जिस टॉपिक का नाम है गेस व्हाट। ऐसा आपने देख ही लिया है, लेकिन उस टॉपिक का नाम है स्ट्रिंग फंक्शंस। क्योंकि बिकॉज ये जो स्ट्रिंग्स है इस पे 4 to 5 MCQs आने के पूरे चांस हैं and 2 to 3 output based questions will be based on these string functions only, and string handling जो आपका chapter है will be based on that only. So for that case you need to know about the string functions कि जो string functions होते हैं वो क्या होते हैं और किस किस टाइप के आपके string functions होते हैं। तो सभी functions की which is there in your syllabus, which is important for examination, we'll be talking about them. First of all, there is a function called string trim. तो कोई string होगा, dot trim function होता है। मान लीजिए हर जगह I have created a string like this, string str is equals to sc dot next line, means I have used the scanner class and I have inputted a new string in the variable called str. So first function is trim, so it will be written as str dot trim. तो इसमें कैसे होगा? It removes beginning and ending spaces of the string. So for example, I've told you in my output based video, for example, आपको एक ऐसी string दी है, space and hello is given and space. So what happens, इसमें जो भी leading and trailing, मतलब starting के और end के zero होते हैं, they are removed. So your new string will be just HELLO, this only. Now to lowercase, it returns a string in lowercase. मान लीजिए your string was this big hello, it will be small hello. And there it is, the another part of this is to uppercase. Uppercase में returns a string in uppercase. Uppercase में वही है, this string will be converted to HELLO in capital letters. And after this you are having another function, it's dot length. It's dot length, सबके सामने आपको dot लगाना है. Dot length function is what? It returns the string length. एक होती है length. Length मतलब कि how many characters are there, कितने total spaces उसने लिया है. जैसे 0 या straight कितने मतलब total इसके अंदर कितने present है उसे आपको निकालना है. You will start from here 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 है. बाकी when you have removed the 0 then it was only 1 2 3 4 5. So इसकी जो length है, length is 7 and here length is 5. Length always starts from 1 and all other things जो भी आप all other operations करोगे that will start from 0. So this is the case here. ये जो इनके सामने these data types are mentioned, these are the resulting data type कि वो किस चीज़ में result करता है, what will मतलब जो final answer आएगा आपका वो किस चीज़ में आएगा, कौन से variable में आएगा. For your instance I am making it like this much. Then we have char at int n. इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई सी भी string, you are having string है, this is my name Shubham, you are having, this is my name. You have to find the char at int n, means at n position what is the character at n position. So I will first of all write it. This is 0 1 2 3 4 5 6. If I will write, and this is st is equals to Shubham, if I will write st dot char at and I have written a number 5, so what will come? 0 1 2 3 4 5. The answer will be A. The answer will also be returning the value in char only. कि आपको char चाहिए, char कौन सा, char उस पोजीशन पे है. And there is index of int char. ये इसका उल्टा है, मतलब you have to give the command of n character and then that character's location within the string will be found. So you have to write st dot index of I will write h. So h का कितना index है? 0 1. Now you will say there are 2 h. So what you will write?
तो इसमें दो चीज़ होती है, एक होता है इंडेक्स ऑफ मतलब जब पहली बार फर्स्ट टाइम व्हेन दैट कैरेक्टर इज अकरिंग इन दैट स्ट्रिंग उसी वैल्यू को लेना है। पहली बार h1 में तो 1 होगा। एक आपके पास और होता है जिसे हम बोलते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ। इफ आई राइट लास्ट इंडेक्स ऑफ h, इसका मतलब h लास्ट बार कब आ रहा है, तो 1 2 3 4 पे आ रहा है। तो ये आंसर है। आपको यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ नहीं दिया है, पर दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। देन वी हैव स्ट्रिंग कॉनकैट स्ट्रिंग str। मतलब कॉनकैट का मतलब है कि इन इट कॉनकैटिनेट्स द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग। कॉनकैट का मतलब होता है जोड़ना, ज्वाइन करना। मान लीजिए आई वॉज हैविंग ए स्ट्रिंग ए आई वॉज हैविंग SSP। The string, कोई भी blank space नहीं है, blank space I will mark with this. If there will be a blank space, I will mark with a dotted this dotted dash, and B is classes. So when if I will write A dot concat B and I will write B dot concat A, so both are two different things. दोनों बहुत different है। इसमें क्या करना है आपको, एक पहले आएगा बी बाद में आएगा, ए के साथ बी जोड़ना है। सो SSP classes without any space because there is no space here and no space here, so कुछ नहीं आएगा। Now b dot concat A, so b पहले a बाद में, तो लिख दीजिए इसे classes SSP। Like this it will written. Concat will just join two strings. Then there is boolean equals string str. Boolean is a data type to check whether it is true or false. True false की check करने के लिए होता है। Here it is in such a way कि आपको check करना है कि equal है नहीं। एक होता है equal and one is equal ignore case. So both I will explain you come here. For example, I am having a string AP and then I am having a string AM. String AP you are having Java like this, and string AM you are having Java like this. And if I said AP dot equals AM, and if I say AP dot equals ignore case AM, so what will be the following answer? And the return type of these both are boolean, so either the answer will be true or it will be false. So AP will be compared with AM. So here AP is Java, AM is capital Java, are they equal? So जब ये simple equal होता है, so what happens in this is that both should be identically एक जैसे होने चाहिए, मतलब एक जैसे होने चाहिए। Java पूरा कैपिटल है तो ये पूरा कैपिटल है, ये ऐसा है तो यहाँ भी ऐसा होना चाहिए था, so it will return false. And now again we are having APS like this Java and AMS capitalized Java, and there is ignore case. Ignore case means you have to ignore the uppercase or lowercase. If the word is same it will return true. यहाँ Java है, यहाँ Java है, so it will return true. This is your equals and equal ignore case function. Then you are having compare to function, then ये भी आपका int होता है, this also int, and then you have int compare to ignore case. So how you need to do this? इसके लिए भी आप एक ले लीजिए, take a string BC and take a string BD. BC string you can say a name I am taking Abhinav, and related name I am taking so that it can be connected only, and another name I am taking Abhiraj. Okay. So what is there is that there is a function known as compare to. Compare to करके एक function है, तो क्या होता है, what will be there? You have to write BC dot compare to BD, and then you can swap it also
BD dot compared to BC. When there is a first function that is C and उसके बाद मतलब फर्स्ट फंक्शन स्मॉल होता है जो डॉट के साथ होता है, बाकी अगर कोई उसमें नया वर्ड ज्वाइन हो रहा है तो दैट बिकम्स कैपिटल. सो BC कंपेयर टू BD. BC को BD से यानी कि B इसको ऊपर वाले को नीचे से कंपेयर करना है. This is same, this is same, this is same, this is same, and here is N, here is R. So now you have to find what is the ASCII code of N and what is the ASCII code of R. So let's find the ASCII code of N. 65 is A. So it is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. N का जो ASCII code है it is 78. N, O, P, Q, R. R का ASCII code is 82. So we need to subtract them because the answer will be coming in integer data type. So हमने BC को BD से कंपेयर किया है, BC को BD से किया है, तो BC माइनस BD होगा तो आंसर विल बी -4. This will return -4. And if we are comparing BD with BC, now BD will come first. So Abhiraj will be in the top and Abhinav will be in the bottom. This is same, this is same, this is same, this is same. R and N. R का आ रहा था 82, इसका N का आ रहा है आपके पास 78, then you have to minus them and 4. This time the answer is 4, answer -4. And if I say to you equal ignore case, इग्नोर केस कंपेयर टू से अगर इग्नोर केस करना है तो उसमें भी वही है, केसेस को इग्नोर किया जाएगा एंड देन इट शुड बी कंपेयर्ड. तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. स्ट्रिंग रिप्लेस न्यू ओल्ड कैर ओल्ड कैरेक्टर विथ कैर न्यू कैरेक्टर. अब रिप्लेस क्या फंक्शन है, मान लीजिए इफ यू आर हैविंग अ स्ट्रिंग नेम एज मलयालम. This is a very prominent example which comes in your ICSE. पहले बहुत आता था ये. This is a palindromic word also. आपने palindromic number पढ़ा है, से 1 to 1 होता है. If you reverse it, it becomes 1 to 1 only. And this is a palindromic word. It also becomes same only. Malayalam. So MALAYALAM. Like you are having radar. इसको आप सीधा पढ़ो या उल्टा पढ़ो, it is same. So, if you are taking a string name as school, we are having a string s is equals to school, and we have to s dot replace, and we are replacing s. कैसे कर रही है यहाँ पे characters we are replacing. Characters में only one in single inverted comma comes, so we have to replace o जो पुराना है, old character comes first with the new character. So we are replacing O with A. So what will be the answer? The answer of this will be SCHAL. Skal. School will become skal. The return type is string only. Then there is a string substring. And begin index and in begin index to end index. So now I will teach you about substring. So let's take a good word. We are having a word known as knowledgeable, ज्ञानवर्धक. And in case there will be their address also 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. There are 0 to 11 addresses are there, and its length is 12 because length is always 1 greater than the last index. So what is there now? जो आपका फंक्शन है सबस्ट्रिंग, मान लीजिए दिस इज वेरिएबल कॉल्ड kd was the variable for this. So if I do kd dot substring means to cut apart from your string. So if I do kd dot substring and if I do 2, just 2, so from this 2 to the end everything will be everything will be trimmed out and this will be printed. So 2 के बाद जितना भी है, 2 से जितना भी है लास्ट तक सब प्रिंट हो जाएगा. सो इट विल बी OWLEDGABLE, ओलिजिबल.
एंड अब आपके पास जैसे इसमें दो पैरामीटर्स पास हो गए. इफ इट इज लाइक दिस दैट kd dot substring, if I write 4,8, then what will be the answer? See, we have to find 4 is here, 5 is here, 6 is here, 7 is here, and 8. But 8 will not come. Only up to 7 will come. Means it will start from this number and it will end इससे एक पीछे. It will end one back from the last index. So it will be LEDG. For example, if I ask you to trim from 3 to 9, so it will be 3, 4, 5, 6, 7 and 8 only. It will be WLEDGA. WLEDGA. Ledger. So this is your substring function. Then it is Boolean starts with and Boolean ends with. Okay, so how you need to do it? String str and string suffix. For example, आपके पास एक string है. String ले लीजिए. STM is a string and it is I am a good boy. And if I do something that STM dot starts with means क्या STM किससे शुरू हो रहा है? STM dot starts with I. मतलब क्या आपका STM जो आपका string है, it starts with I. So it's a Boolean type of variable. So it will either return true or false. Yes, it is starting with I only, so it will return true. And if it was that ऐसा होता, अगर मैं इसको दूसरा समझा दूँ, if there is a ends with function also, ends with, so if I write stm dot ends with, if I write girl, so can you see any girl in the last? No, there is a boy only, so it will return false. और यहाँ पे केस की रहेगा, यहाँ पे कोई इग्नोर केस नहीं है. द केस शुड बी सेम. इफ आई राइट दिस आई लाइक दिस, इट विल हैव गिवन false. If I write this girl GIRL, then also it is false only. So that's it. These are all your string based functions. आपने इन सभी string based functions को समझ लिया. It will definitely help you in your MCQs, in your output based questions, and also will definitely help you to revise and to do questions related to string. क्योंकि string के सारे questions जितने भी हैं, they are all formed from these type of functions only. So very soon I am bringing a video on the string chapter also, the programming in string, and then I will bring a video on two-dimensional array, how to initialize the two-dimensional array, how to accept the numbers in it, and how to do the different types of programs and operations in it. Till then, keep studying. Thank you very much.